हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ट्रम्प्स इंसेन कैबिनेट टेकिंग शेप, जिमी इंटरव्यूज मार्को रूबियो एंड द क्या है ये, क्या है, बिगलेस्ट इलेक्शन मोमेंट। बिगलिएस्ट क्या होता है? बिगेस्ट तो सुना है मैंने। बिगलिएस्ट इलेक्शन मोमेंट्स देखते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, इसको लाइट हार्टेड वे से लिया करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे मतलब अगर आपके वो लीडर का इस टाइप से मजाक उठा कुछ करे ना तो उसको लाइट लिया जाता है सीधा। ये जो बाइडेन का भी करता है, ये सबके लिए करता है, ये कॉमेडी। हाँ, हमने तो सबके लिए देखा, क्योंकि आप लोग कई बार कईयों के कमेंट्स में आया था, मेरे को लग रहा है कि वो कह रहे थे कि ये बड़ा उस टाइप से है, फलाना ठमकाना। जो भी है हर चीज हम लोग तो सीरियस नहीं लेते हैं। हम तो सीरियस लेते हैं, हम तो मजे के लिए बस देखते हैं। तो उसको उस टाइप से मत, उस सेंस में मत लो, मजे लेने में लो कि किस तरह से कॉमेडी कर रहा है। Some things are okay in everybody's point. इसलिए कई चीजें ठीक भी होती हैं, कई रॉन्ग भी होती हैं। तो चलो मजे लेते हुए देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, क्या करेगा? You, but I am eagerly anticipating a bigly get-together in Washington tomorrow, where President Biden will elect Trump at the White House. This is the political equivalent of when divorced parents who haven't been in the same room since court show up for their kids' school play. You know, this meeting of the outgoing and incoming presidents is a tradition that goes back to 1841. Since Donald Trump, Lincoln being one, he was unable to attend, and Trump being the other 4 years ago. You know, when they had to drag him out of the White House by his feet, but. Typically, the first ladies would get together for this meeting, but Melania said no. Trump's team claims Melania had a scheduling conflict related to her book that came out 5 weeks ago, which doesn't sound true. She should have come. She's probably She's probably in the middle of putting up her Christmas decorations. I know that's something she looks forward to. But this snub gives us an interesting glimpse into something we've been joking about, but it might actually turn out to be true. She's not showing up tomorrow. Is she going to move back into the White House? What do we know? There's a lot of speculation right now, and I've heard from a lot of sources that they don't expect her to be there full time. They say that she'll come in, they insist she'll be there for big events, talking about state dinners, big trips, big meetings, but that she's not going to set up a full-time presidency. She'll be wherever he is. That's how it'll look. I mean... This हो गया, मैं सुना ही नहीं। First lady treats the White House like it's an Airbnb. Is that a good sign for a relationship? Can you imagine if they split up? Can you imagine if we had a single Donald Trump hitting on UN translators, bringing playmates from 1994 back to the Lincoln bedroom? It could be really great, actually. You know, we're starting to get more of a sense of what season 2 of The Celebrity President might look like, and it is. According to his new chief of staff, Susie Wiles, Trump plans to issue a number of executive orders on day 1. He wants 4 Big Macs, 6 large fries, buckets of KFC, and in addition, he wants to what's executive orders eliminating immigration and his ongoing fight against the climate. Wiles shared these thoughts at a 3-day conference for the Rockbridge Network, which is a group of right-wing money people co-founded by J.D. Vance that is focused on treating America as one big couch. They can all screw together. Wiles headlined the event and indicated that Trump is going to keep holding rallies. You know those rallies he loves? He's going to keep doing them even though the election's over. That way Americans can stay up to date on the size of the late Arnold Palmer's dong and whatnot. The GOP is expected to win the House now. They already won the Senate. Of course, they won the White House, too. I don't know, maybe next time all these political experts can publish their articles on where the Democrats went wrong before the election so we don't have this happen. And then you have Elon Musk throwing his weight around. He's basically moved into Mar-a-Lago, and based on this photograph he posted, looks like he may have moved into the Trump family itself. Look at this. ये कहाँ है? आगे Now, did you notice who was not in the photo? Melania was not in the photo. Elon was. Melania. You see what you get for $100 million? Meanwhile, poor Eric is like, why won't the gate open? Someone let me in.
It's almost like he's goofing on us. Trump is expecting to name, wait till you hear this. First of all, he's South Dakota Governor Kristi Noem, Secretary of Homeland Security, to keep our nation safe from unruly labradoodles, I guess. One of his main messages during the campaign was about killing the pets. They're eating the dogs, they're eating the cats. He goes out and hires the woman who shot her puppy. Kristi Noem shouldn't be in charge of a PetSmart, let alone Homeland Security. We have a new ambassador to Israel on the way. It is former Arkansas Governor Mike Huckabee, whose deep connection to the Jewish people includes a very wicked sense of humor. Much of America spent this past week shivering through record-setting cold thanks to the polar vortex. Now, ask me, how cold was it? It was colder than the stares you'd get from environmentalists if you denied global warming. That's how cold it was. Good one, Mike. His audience looks like a Cialis commercial come to life. So he will be running point in Israel. Trump, and we just got this news like a minute ago, hired Pete Hegseth. You know who this is? He's a guy on the Fox and Friends Weekend Edition to be Secretary of Defense. सच्ची बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. Must be devastated. And then we have this guy who's reported to be Trump's choice for Secretary of State. Nothing has frustrated me more than false choices like the one the president laid out tonight. The choice isn't just between big government or big business. Yeah, we all thought that was the end of Sippy Longstocking, but it was not. He's going to be Secretary of State, and which is surprising when you consider some of the terrible things Trump has been on the record saying about Marco Rubio. वो तो I सर will address, little Rubio. Little Marco, you know Marco. Little Marco. He's a little, L-I-D-D-L-E, little. He couldn't get elected dog catcher. I call him lightweight Marco. He's a very nasty guy. He's a nervous basket case soda lightweight. And little mouth on him. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. He has really large ears, the biggest ears I've ever seen. And he was sweating so ये हाल था जब उसके bad. अगेंस्ट लड़ा I've था. never seen anything like it. It looked like he just jumped into a swimming pool with his clothing on. I walked back there and he's with a pile of makeup putting on his face. I said, Marco, easy with the makeup. The problem with Marco, he's a joke artist. He jokes. It's Rubio! ये क्या है? उसका ही पानी पानी जैसे जैसे पिया पिया था. था. He did everything but give him a swirly, and now he's going to be his Secretary of State. That's which is politics, vintage right? Trump. That's You call politics, somebody right an there. idiot until they kneel down, and then you take them into your arms and you cradle them like a baby. And while it's disappointing that a tough Trump critic like Marco Rubio would humiliate himself for a position of power, to his credit, he did agree to talk to us. And joining us now from Washington, Senator Marco Rubio. फिर भी वो आया है, देख लो. वो फिर भी आया है ये सब सुनने के बाद भी. Because they take it as a joke. They're not taking it offensively. Well, I don't know what you're talking about. I can just tell you that a con artist is about to take over the Republican Party and the conservative movement, and we have to put a stop to it. ये नकली तो नहीं है. What? He is wholly unprepared to be president of the United States. ये पुराना होगा I've been कोई. saying that for years. I have to say I'm shocked to hear it coming from you. There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement, and Donald Trump is a con artist. Yes. अब वो आ गया, अब क्या रो रहे हो तुम He's लोग? not as awful as we दिखा both रहे know हैं he is. reality हो गया. Why do you That's think how so it many is. people voted for him? I will acknowledge that there are some people watching this broadcast that are intrigued by him because they think he's a straight talker and he fights for the little guy. But Donald Trump has spent 40 years sticking it to the little guy or longer. And you're a little guy, so what is the plan then? I mean, how are you going to stop him? Now I'm asking everyone watching tonight, if you're a Republican and you don't want your party taken over by a con artist like Donald Trump, unite behind us, go to our website, marcorubio.com, and join us so we can put an end to this lunacy. Well, you know what? We will, and I wish you luck. It's so good to finally see a Republican senator brave enough to speak the truth. Thank you. Give us a little smile, will you, Marco? Thank you. Thank you. Thank you. भाई यार दिस इज पॉलिटिक्स. ये वही मुझे इसको देखकर देखो, पहले जब हम शुरू में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ये अब एक कुछ सालों में इस टाइप की हुई है. देखिए अभी इससे व्हाट डिड जिमी किमल प्रूव कैसे ये प्रूव किया है कि जब एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं तो बहुत कुछ बोल दिया, और उसके बाद जो हार जाता है वो इमीडिएटली जिससे लड़ रहा था 1 मिनट पहले उससे मिल जाता है, फिर उसी के गुण गाता है या उसी के साथ हो जाता है. यही पॉलिटिक्स है, यही तो होता है. इंडिया में भी तो यही होता है.
हर जगह यही हो रहा है। आप पहले जा रहे हैं किसी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पूरी जान लगा अगेंस्ट लड़ते हैं, हार जाते हैं, उससे मिल जाते हैं। नहीं, पर पहले मुझे याद है, पहले सालों में शुरू में जब हम आए थे, उससे अब ये लेटेस्ट ही ऐसा सब देखने को मिला। उससे पहले तो हमने इस टाइप की ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं देखी थी, सच बता रही हूँ, ये गंदी पॉलिटिक्स हमने नहीं देखी थी। डिबेट्स होती थी, ऐसे लगता था कि हाँ साफ सुथरी अच्छी पढ़े लिखों की तरह की डिबेट्स हो रही हैं। ये तो अब जाके ऐसा हुआ है। पॉलिटिशियंस यही कर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेट्स में भी क्या उन्होंने भी इसी तरह से बातें की थी, क्योंकि मुझे वो नोट करना है। पर जो भी है, जनता ने भैया देख लो, ये सब होने के बावजूद जो अमेजिंग बात है कि ये सब देख के भी हम लोगों ने वोट उसी को दिया जिसका हमें लगा कि ये जो बोल रहा है वो हमें चाहिए और वो कह रहा है वो देगा। बाय इग्नोरिंग द पर्सनस कैरेक्टर। एग्जैक्टली, हम तो बोलते उसका हैं पर्सनल मैटर है। हाँ, मैं तो खुद ही कहती हूँ कि मैं तो बहुत डाउटफुल थी, पर उसने जो बोला उसमें हमें दिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कंट्री की हालत। हमने देखा कि भैया दूसरे लोग बोलते अच्छा है, उस टाइप से नहीं करते, पर घंटी को तो डुबा रहे हैं यार। पर ये बंदा जो है, चाहे वो बोलता इस टाइप से, पॉलिटिक्स गंदी हो रही है, अब एक होप डाला है कि भैया तुम जो बोल रहे हो वो लग रहा है उससे देश बचेगा, चीजें बेटर होंगी, तो एक चांस तुमको देते हैं। वही बात हो रही है। तो वही कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेट्स को पहले अब पहले बता देना चाहिए कि तुम कहाँ गलत हो, सोच के, या बाद में जो तुम देख रहे हो कि क्या हुआ। नहीं, और बहुत बुरी तरह हारी है डेमोक्रेटिक पार्टी। उनको पता चल गया रीजन। मेरे को तो लगता है हिस्ट्री में कभी भी इतनी बुरी नहीं हारी होगी। That is what is shocking. कि लास्ट मिनट में एक बंदा आता है कि मैं लड़ रहा हूँ, और बीच में ही दिखाता है कि मैं नहीं कर पा रहा डिबेट में, ओल्ड एज की वजह से, उसको हटा देते हैं। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिसको आज तक पूरे कार्यकाल में मौका नहीं दिया था कुछ करने का, उसको सामने कभी आया ही नहीं लाइमलाइट में, किसी को पता ही नहीं, तो पीछे कहीं बैक स्टेज पे बैठा हुआ बंदा था। जब मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो कमला हैरिस को कोई आपने लाइमलाइट, रिस्पॉन्सिबल रोल्स ही नहीं दिए जिससे पता चले कुछ टीवी में नहीं, कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं, कुछ करने नहीं दिया। तो गायब थी, 4 साल गायब थी। जब बैकआउट कर रहे हैं तो उसको लाया, क्योंकि फंड रेजिंग में आसानी होता है, फिर वही होता है, फिर वही होगा। अगर वो चाहते तो इतने सारे यंगस्टर्स जो केपेबल थे, जिनको डिबेट करने देते, उनमें से चूज करते, आउटकम वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। और साथ में दूसरा था कि भैया जहाँ पे भी जाना वहां पे बोल देना, अगर आप वहां पे जा रहे हो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी तो मैं भैया ब्लैक हूँ, आप इंडियन कम्युनिटी में जा रहे हो मैं इंडियन हूँ, आप दूसरी जगह पे जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। जूस के पास जाओगे तो जूस को तुम बोल देते हो, वहां पे पैलेस्टीन के लोगों के पास जाते हो तो तुम पैलेस्टीन को बोल देते हो। भैया तुम्हारा तो कोई है ही नहीं है, एक ही तरफ कुछ है ही नहीं है, तुम तो हर जगह लोटे की तरह इधर कभी जा रहे हो उधर जा रहे हो, तो बंदे भी कंफ्यूज हो रहे थे सुन के। बट ट्रम्प वाज भैया मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ही वाज पसंद आ रहा है ठीक है वोट करो, नहीं पसंद आ रहा मत करो, वो तो वो उस टाइप से था, तो इसलिए ये हुआ है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।